for what? Bohr-Summerfield. So let's go for what? Bohr-Summerfield theory. So बोर ने क्या कहा था? बोर ने एक प्रॉब्लम, बोर ने जो सॉल्व किया था चीजों को, he just take a basically circular orbit. But in general, when you will go for the effective potential and you are just going to plot effective potential, and what is your V effective? Your V effective is equal to J square upon 2mr square minus K by R, where K is equal to the same K, that is E square upon 4 pi epsilon naught. ये हमारा K है. तो इसके लिए जब हमने V effective देखा, so my V effective is something like this, exactly same as the Kepler's problem. So this is V effective versus R. So अगर आप यहाँ देख रहे हो, so it is not necessary that your orbit is always a circular in nature. It may be circular in nature, it may be elliptical in nature for the bounded system. And obviously we are talking about the bounded system. कैसे system के बारे में बात कर रहे हैं? Bounded system के बारे में बात कर रहे हैं, because hydrogen atom is one of the very fundamental example of bounded system. Now, so if you are just going in an elliptical orbit, so Summerfield give the idea that okay, this only circular orbit is not possible, rather elliptical orbit is also possible. And this is due to fact that we have 2 degrees of freedom, and 1 degree of freedom is obviously the angular degree of freedom, and another is what? Radial degree of freedom. So Summerfield corrected the whole thing by new quantization rule. एक quantization rule तो उन्होंने exactly same लिया, that is what? P theta d theta is equal to, now we are using 2 different quantum number, and that is n theta h. And we know that P theta is constant of motion, because this is just a central potential. VR is nothing but minus E square 4 pi epsilon naught R. This is just a central potential. So yes, there is conservation of angular momentum, and this P theta is exactly same thing, that P theta can be calculated as n theta h upon 2 pi. So this is your P theta. Now, if you are going into the elliptical shape, or if there is possibility of some another shape, and obviously if you are in a bounded system, then obviously either circular or elliptical is possible. We have done all this thing into classical mechanics. Then what we have basically a new quantization, that is PR dr is equal to nrh. So this is one of the challenge, that how we can get this particular thing and how we can use it. समझ में आ रहा है मैं जो बात कह रहा हूं, है ना? Yes, sir. So this is your new thing, and obviously we know that what is the solution of this type of if suppose something is rotating in an elliptical orbit, और elliptical orbit में हम exactly जो Kepler's ने चीजें कही थी उसी को ध्यान में रखते हुए, we are just taking this as R, here is my proton and here is my electron, and this angle is theta, then obviously you can use this equation, L upon R is equal to 1 plus E cos theta. Cos theta. है ना? कर सकते हैं इसे? And what is theta dot? Theta dot is nothing but P theta upon mr square, and P theta is constant. Yes? P theta is J, जो हमने classical mechanics में J लिया था, that is exactly P theta, which is constant. So the whole idea is that how we can get this PR dr. So obviously देखो बहुत इंटरेस्टिंग है ये, अब एक्चुअली ये इतना इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन है, सो मैं इसके कारण इसको कर रहा हूं, अदरवाइज एग्जाम में तो बहुत रेयरली क्वेश्चन आते हैं, बट यू हैव a very good insight from the classical approach that there may be different shape of orbit, है ना, जिसको कि आप एंगुलर मोमेंटम L से दिखाते हो फाइनली इन अ क्वांटम मैकेनिक्स, है ना? है ना? So let's try to go for this. So we can just differentiate it. Differentiate कर सकते हैं. Minus L upon R dot is equal to minus E sin theta dot. लिख सकते हो ना?
and from here we can find, and theta dot को क्या लिख सकते हो? P theta upon m r square, Yes, sir. है ना? So this can be, this minus minus is cancel out. Then we can go for L upon r square. R dot is equal to E sin theta, and this theta dot is P theta upon m r square. लिख सकते हैं ना? Sir. लिख सकते हैं. And now we can multiply with both side with m. तो यहां पर क्या हो जाएगा? R, we can compare this thing, r square को compare करते हैं. So what is your r dot is equal to E sin theta P theta upon m. होगा ना ये? M को मैं इधर लिख, and L will be also there. L will be also there. So from here we have PR is equal to what? MR dot. यही तो होगा, याद है? Yes, sir. है ना? This is PR is equal to MR dot. So we can multiply with M, and you have E sin theta P theta upon L. Clear है ये? Yes, sir. This is your radial momentum. ये क्या मिल रहा है आपको? Radial momentum. Now अब इसी इक्वेशन को फिर से देखो, बड़ा मजेदार है ये डेरिवेशन. And now if you will go for this particular derivation, you can go for L upon r square dr upon dt is equal to E upon sin theta d theta upon dt. लिख सकते हैं ये? Yes, sir. And from here you can write dr. What is value of dr? dr is equal to E sin theta, and dt you can just compare to each other. So this will be E sin theta upon L, है ना? Sorry, यही तो होगा. R into R square. Yes, clear है ये? Into R square. Clear है ये? Okay. And R square को क्या लिख सकते हो? From here? यहां से. What is R square? From here, R square is equal to L upon 1 plus E cos theta. So what is your dr? You can write your dr. हाँ, L square by this thing. ठीक है? So from here we can write dr is equal to E sin theta upon L, और R square को क्या लिख दे? L square 1 plus E cos theta. Look at, beautifully we have written PR in term of theta and dr in term of theta, and now we can go for this equation, isn't it? Yes, sir. Yes, sir. जा सकते हैं. So जब हम इस इक्वेशन में जा रहे हैं, then I think you will appreciate this statement. एक बार चेक कर लेना, मैंने कहीं गलत तो नहीं किया है. सर 1 plus E cos theta whole square आएगा क्या? नीचे. हाँ नीचे भी स्क्वायर आएगा. That will be square, obviously. अभी कर रहे हैं. So when you will go for PR dr closed curve, so PR के जगह पर क्या लिख दे? E sin theta P theta by L. MR dot E sin theta P theta upon L, और dr के जगह पर क्या लिख दे? Just dr में d theta भी आएगा ना? हाँ? dr में d theta भी आएगा. हाँ, d theta भी होगा. That is d theta is also there. D theta is also there. Let me write this thing. So this value is equal to what? sin theta by L. कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या? Let me check. आर स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से लिया सर? यहाँ से. ओह, ठीक है? So what will be this value? जरा देखते हैं एक बार क्या आ रहा है finally. So let me check. हाँ. So this value is equal to P theta, and this value is equal to E
sin theta L square, and you have d theta is also there upon 1 plus e cos theta whole square, and 1 L is also there ना, Yes, sir. The denominator. 1 L is also there, यहाँ पर वो एक L और होगा. Yes, एक Yes, तो sir. ये वाला L है, इसका वाला L छूट गया ना. So now what will happen? This is independent of this L square, and now this will be go from everything is written in term of what? Theta. सारा के सारा किसके टर्म में लिखा गया? थीटा के टर्म में. So now you can see this term is integration of PR dr is, and what is p theta is constant, so we can take it outside. And what will be integral? Integral is e square sin square theta d theta by 1 plus e cos theta whole square. Now, if we will going for the closed integral, then what will happen to this equation? If we are going for the closed equation, कहां से कहां जाएगा theta की value? 0 to 2 pi. So you have one particular equation, and this value is equal to, and what is p theta? P theta is constant, and that value is n theta by And theta h by 2 pi. h by 2 pi. So here you have p theta, and you will go from 0 to 2 pi e square sin square theta d theta 1 plus e cos theta whole square is equal to nothing but nr h. होगा ना? This value is nothing but what? nr h. So now if you are going to do this integral, और यहां पर देखो, यहां पर p theta की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? You can write this thing from value of this particular p theta, and that value is equal to n theta h cut. लिख सकते हैं ना? Yes, sir. This is nothing but what? N theta h cut, and you can go from 0 to 2 pi e square sin square theta d theta 1 plus e cos theta whole square is nrh. And now you can see here you can have relationship between n theta and nr. ये तो इंटीग्रेशन ही होगा. ये इंटीग्रेशन होगा तो ये किसका फंक्शन होगा? सम फंक्शन ऑफ एसेंट्रिसिटी. Yes, sir. Yes, sir. ये जो भी करोगे that will be some function of eccentricity, and you will get the finally the some relationship between n theta and nr. मैं just ये इसलिए derivation कर रहा हूं because I just want to show you that n theta and nr are related to each other here. Are you getting my point? n theta और nr क्या हो रहा है? एक दूसरे के साथ related हो रहा है. So I am not going to do this integration. I am just writing the complete result. The final result is you will get n theta by nr plus n theta is equal to something 1 minus epsilon square. This is one of the very fundamental result. And what is 1 minus root under 1 minus epsilon square? ये क्या होगा? For elliptical orbit, that is b by a. Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. So from here, we can give the conclusion that this n theta is not equal to 0. क्योंकि अगर ये n theta 0 हो जाएगा तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, जो कि पॉसिबल नहीं है. Isn't it? For the elliptical orbit, b should not be equal to 0, isn't it? Yes. So here, the quantum number which is used by the Summerfield is given by n theta is equal to 1, 2, 3. कुछ बुक में इसे k भी लिखा हुआ है ना, so don't be confused. This is the same thing, and nr will be equal to what? 0, 1, 2, 3, and this nr plus n theta is very famously known as principal quantum number. Are you getting my point? This n theta by n is equal to b by a. और n के अंदर क्या छुपा हुआ है?
nr प्लस n थीटा, है ना। नाउ अब आपको अगर याद हो, जब हम लोग हाइड्रोजन एटम को जब हम लोग डिराइव किए थे विद द हेल्प ऑफ श्रोडिंगर, याद है? यस सर। वहां पर हम लोगों ने, रिमेंबर, यू कैन रिमेंबर, n की वैल्यू हमने क्या माना था, J मैक्सिमम प्लस L -1 टाइप से कुछ माना था ना, रिमेंबर, जब हम लोग सीरीज सॉल्यूशन कर रहे थे तो, यस सर। है ना। एंड नाउ यू कैन सी दिस इज समथिंग लाइक दिस, कुछ इसी तरह का चीज तो है यहाँ पर। ये इंट्यूशन जो आपको डेवलप हो रहा है तो यहीं से हो रहा है डेवलप ना, दिस समथिंग प्लस n थीटा इज इक्वल टू सम नंबर। एंड फाइनली जब ये रिजल्ट देखा गया, व्हाट विल बी एनर्जी ऑफ hydrogen atom? The energy of hydrogen atom is basically exactly same me upon 2h cut square e square by 4 pi epsilon naught whole square, that is 1 upon n square. And what is this n? This n is nothing but nr plus n theta. n की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी? 1 2 3 and so on, isn't it? यस सर। n की वैल्यू आपकी 1 2 3 and so on इस तरह से जाएगी। एंड नाउ डिपेंडेंट ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, अब यहां पर आप डिपेंडेंट हो रहा है, इफ यू विल सी दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, देन व्हाट यू विल सी, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग। सो you have this particular equation, n theta upon nr is equal nr plus n theta is equal to b by a. And now you can see if n theta is 0, yes, अगर n theta की, सपोज n की वैल्यू मैं 1 लेता हूं, सपोज आई एम टेकिंग n is equal to 1, देन व्हाट इज पॉसिबिलिटी? क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? इफ n is equal to 1 और n theta की मिनिमम वैल्यू क्या है? 1 ही होगी, यस है ना। सर। So that is 1 and that value is equal to what? 0 plus 1. And then you have b is equal to a. Are you getting my point? Yes. And then this will be just tell you b is equal to a means which type of orbit you have? Circular orbit, isn't it? And energy is exactly same for the hydrogen atom, and you have circular orbit. And suppose you have in a case where b n is equal to 2, suppose आप n is equal to 2 लेते हो, then what is going to happen? क्या क्या possibility है? सर्कुलर इलेक्ट्रिकल दोनों। Exactly. So when you are getting n is equal to 2, then you have n theta plus nr plus n theta, and in this case क्या क्या हो सकता है? इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, सॉरी इसकी वैल्यू 0 तो नहीं हो सकती है। सो एन थीटा की वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो एनआर की वैल्यू क्या होगी? 0। यस, द केस 1 क्या हो सकता है? केस 1 यू हैव एन थीटा इज इक्वल टू 2, एनआर इज इक्वल टू व्हाट? 0, एंड देन विच टाइप ऑफ ऑर्बिट यू हैव? सर्कुलर, isn't it? And you have case 2, you have, suppose ये भी तो पॉसिबल है, n theta is equal to 1, then nr is equal to 1. Yes या no? Yes. And then you have b by a. What is b by a? That is 2 upon, sorry, 1 upon 2. And this case will tell you which type of orbit? Elliptical. And please, these two orbit have same energy, isn't it? Yes sir. ये दोनों ऑर्बिट की एनर्जी क्या है? सेम, बिकॉज दिस इज डिपेंडेंट ऑन n. So you have degeneration come into picture without solving the quantum mechanics, isn't it? Yes sir. है ना, दो आपको ऑर्बिट मिल रहे हैं और वो दोनों ऑर्बिट, एक सर्कुलर ऑर्बिट है और दूसरा कैसा है? एलिप्टिकल ऑर्बिट है, और आपके पास दोनों के लिए एनर्जी क्या मिल रही है? सेम मिल रही है। सो मैं बार बार कहता हूं, यू कैन नॉट keep your classical mechanics away from your quantum mechanics. Every time you have intuition of the quantum mechanics from the classical mechanics. सिर्फ इन्होंने यही तो चेंज किया ना,
सिर्फ इन्होंने एक क्वांटाइजेशन रूल ही तो लिखा है, p थीटा d थीटा इज इक्वल टू n थीटा h, और दूसरा क्वांटाइजेशन रूल pr dr इज इक्वल टू nrh। और ये तो हम लोग ऐसे भी पहले एक्शन के टर्म में हम लोग चीजों को समझ चुके हैं, है ना। यस सिर्फ इन्होंने एक्सपेरिमेंट को देख करके सिर्फ ये कहा कि भाई आपका pr dr इज क्वांटाइज्ड या p थीटा d थीटा इज क्वांटाइज्ड। दैट इज ओनली थिंग दे आर जस्ट ट्राइंग टू से। क्लियर है ये? यस सर है ना। सो यू कैन हैव अ डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट साइज ऑफ योर ऑर्बिट। और यहां से इन्होंने समरफील्ड ने एक और भी इंफॉर्मेशन दिया। सो यू कैन जस्ट रिमेंबर दिस इंफॉर्मेशन बिकॉज ऑब्वियसली वेरी फ्यू के अभी तक तो कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बट यस यू कैन जस्ट थिंक किस तरह से ये हमें और भी चीजों समझने के लिए काम करता है, इजंट इट? यस सो सर यहां से आप कुछ और इंफॉर्मेशन ले सकते हो। सो दैट यू हैव a इज इक्वल टू n स्क्वायर z a नॉट एंड b इज इक्वल टू n थीटा n बाई z a नॉट। ओके, सो यहां से आप क्या आपका ऑर्बिट का शेप होगा, क्या साइज होगा, आप बोर रेडियस के टर्म में सारा चीज निकाल सकते हो। एंड यस यू हैव अ डिफरेंट शेप एंड साइज ऑफ ऑर्बिट। उसी तरह से n इजिकल टू 3 के लिए क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, और हर एक के लिए एक ही सर्कुलर ऑर्बिट पॉसिबल होगा, इजंट इट? यस सर है ना। और बाकी सारे ऑर्बिट क्या होंगे, elliptical इलिप्टिकल। और ये तो हमने क्लासिकल मैकेनिक्स में भी देखा था, इजंट इट? याद है, यू हैव ओनली वन सर्कुलर ऑर्बिट एंड ऑल अदर ऑर्बिट आर व्हाट, elliptical in nature, isn't it? yes Exactly same thing is going to repeat into this particular quantum mechanical thing. Okay, so this is all about your Bohr-Summerfield theory, and he just tried to tell the degeneracy part, try to explain fine structure, but he could not explain completely. So why we have to go into what, quantum mechanical approach. यहां तक क्लियर है ना? yes sir yes sir ठीक है। सो एग्जाम के लिए आप जस्ट ये देख लो, दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका क्या फॉर्मूला है, En क्या है, एंड ऑब्वियसली दिस फॉर्मूला। ओके, सो 3 फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट। अगर कभी किसी ने बहुत ही डीप रूटेड क्वेश्चन पूछा तो दिस इज योर एनर्जी। एंड ऑब्वियसली बोर रेडियस इज एग्जैक्टली सेम थिंग। व्हाट इज बोर रेडियस? 4 पाई क्या होगा बताओ, एप्सिलॉन नॉट h कट स्क्वायर अपॉन me स्क्वायर। सो यू हैव सिग्निफिकेंस ऑफ बोर। सो ऑब्वियसली फिजिक्स तो ऐसा ही होती है ना, फर्स्ट आप बिल्कुल आइडियल सिस्टम को करते हो और फिर उसे आप ले जा करके कुछ नॉन आइडियल चीजों को इंक्लूड करते हो, एंड देन यू कैन सॉल्व ऑल दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, yes sir ओके। सो लेट्स गो फॉर बेसिकली जो हमें सीखना है, जो हमें समझना है, दैट हाउ वी विल गो फॉर द क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट। और अभी तक हमने क्या किया था और आगे हम क्या करेंगे वो हम जरा देखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सो दीज टू थिंग आर व्हाट, मेनली सेमी क्लासिकल थ्योरी। लेट्स गो फॉर कंप्लीट क्वांटम मैकेनिकल पिक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम, जो हम लोगों ने पहले कर भी रखा है ना। सो उसमें हम क्या क्या करेंगे वो हम आगे देखने की कोशिश करते हैं। सो इसको मैं हटा दूं, इट्स ओके? yes sir ओके, और नोटेशन से घबराना मत। सम पीपल हैव यूज एन थीटा एज के, बट मैं एन थीटा यूज किया हूं बिकॉज एन आर एन थीटा इज गुड टू अंडरस्टैंड कि कौन किसके कॉन्जुगेट में है, कैसे आप चीजों को ले सकते हो। यस, yes sir so the whole idea is that how you are going to try to understand the fine line. So जो हमें एक लाइन दिखाई दे रही थी इन जनरल, इन अ वेरी ऊपर से देख रहे हो, then you are just saying one line, but if you will go for a very high level of resolution you can see more than one line. So obviously one thing can be discussed by the this particular thing, reduced mass, effect of reduced mass.
तो उसके थ्रू जो उसके आसपास में जो बिल्कुल ही शैलो लाइन दिखाई देती है उसको हम थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर पाए, बट वी डिडंट कंप्लीट एक्सप्लेन द ऑल पॉसिबल लाइंस। तो ये ऑल पॉसिबल लाइंस कैसे जनरेट होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, एंड दैट विल बी द क्वांटम मैकेनिक्स विल गिव द कंप्लीट आंसर ऑफ द फाइन स्ट्रक्चर। ओके, सो लेट्स ट्राई टू गो फॉर अ फाइन स्ट्रक्चर थिंग। So when you have solved this equation, what is your Hamiltonian? Hamiltonian क्या था हमारा? p स्क्वायर बाई 2m, मैं जानबूझ करके वेक्टर के टर्म में ले रहा हूं, माइनस ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। दिस इज योर कंप्लीट पिक्चर। ये p स्क्वायर लिख रहा हूं तो क्या हुआ, r थीटा फाई में लिख रहे हैं, एंड यू कैन इजिली राइट दिस थिंग। यस, and you can just go for this particular thing, minus h cut square, that will be suited to you much better. Psi, you can just go for h psi minus e square 4 pi epsilon naught r psi is equal to what, e psi। और यहां पर हमने psi तो निकाल लिया था, and this is solved by the Schrodinger wave equation, and we have psi n l m, and what is this value, radial wave function r n l function of r and y l m theta phi। this r n l is basically Laguerre polynomial e to the power minus r upon n naught। याद है ना ये? Yes, sir. Okay, and we have completely solved the thing, and what will be energy eigenvalue? The energy eigenvalue is equal to minus m e square, sorry, m upon 2h cut square e square by 4 pi epsilon naught whole square 1 upon n square। तो ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था, और इन जनरल स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम को यहां से एक्सप्लेन किया जा सकता था दैट एनर्जी इज ओनली फंक्शन ऑफ n, but we have seen that velocity is approximately in order of 10 to the power 6, है ना? सो ये जो हम लोगों ने जो अप्रोच किया है, दिस काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली व्हाट, नॉन रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी। कैसा काइनेटिक एनर्जी लिया है हम लोगों ने? नॉन रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी, p स्क्वायर बाई 2m। सो this number is significant number, isn't it? 10 to the power 6 is a very high speed. Yes, so ये आइडिया दिया गया कि if we will go for the relativistic kinetic energy, then we have some new information. And what is fine structure? The fine structure of the hydrogen atom is the combined effort of relativistic correction plus correction due to L and S, due to coupling of L and S, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आपस के मोशन के जो कारण कपलिंग हो रहा है। वी विल डिस्कस दिस थिंग इनटू टुमारो क्लास। टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस ER। ओके, सो इन दोनों का जो इफेक्ट होगा, that effect will give you the fine structure story. So let us try to go for ER. What is ER and how we can discuss this particular ER? तो इसे डिस्कस करने के लिए हमें बेसिकली दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट पता होने चाहिए, और आप चाहो तो इसको याद भी करके रख सकते हो। These two results are very important. 1 upon R का एवरेज वैल्यू is given by n स्क्वायर a नॉट। ओके, किस स्टेट के लिए? nth स्टेट की बात कर रहा है, हम लोगों ने ग्राउंड स्टेट के लिए निकाला था, याद है? Yes, sir. है ना? सो दैट इज 1 अपॉन a नॉट, एंड 1 अपॉन r स्क्वायर का एवरेज वैल्यू
is 1 upon L plus half n cube a naught square. Okay, so these two things will use for your calculation. आप इसको चाहो तो याद भी कर कर रख सकते हो, ठीक है. So let's try to go for a relativistic correction और उसे जरा देखने की कोशिश करते हैं. Everyone is comfortable? Okay. हाँ बोलो, कुछ बोल रहे हो? नहीं सर, वो ये सर कह रहा था. Yes sir. Okay. सर ये ER क्या है? ER क्या है बोले तो? ये फाइन स्ट्रक्चर में ER Relativistic correction. And this is fine. This is LS coupling के कारण जो correction हो रहा है. अभी करके दिखा रहे हैं. Don't worry. Okay. Just wait for 5 minutes. 5 मिनट में खत्म होने जा रहा है. Okay. So what is your Hamiltonian? Kinetic energy plus potential energy. And what is your relativistic kinetic energy? P square C square plus M square C4 minus E square upon 4 pi epsilon naught 1 upon R. Sorry, this is your total energy. Sorry. Total energy minus MC square. So this is what? Kinetic energy, isn't it? Plus, Yes, sir. and this value is equal to minus E square 4 pi epsilon naught R. What we are going to do? We will just try to take MC square common. So this will be MC square and you have 1 plus PC upon MC square whole square to the power half minus MC square. What is M? M is nothing but the rest mass of electron. Okay. 4 pi epsilon naught R. ठीक लिखा हो ना? So this C is cancel out. एक C cancel हो जाएगा, ठीक है? So we can just go for Taylor expansion. इसको Taylor expansion से जा सकते हैं. MC square, the first term is 1 plus P square upon 2M. Yes, sir. 2M square and C square. Okay. The second term is what? Minus P to the power 4, 8. यहां पर क्या हो जाएगा? M to the power 4 and C to the power 4. यही होगा ना? Yes, sir. Yes. And what we are doing, we are just neglecting the higher order term. Minus MC square minus E square 4 pi epsilon naught R. So what will happen? This MC square and this MC square is cancel out and your effective Hamiltonian is, so I am just changing this thing. So your effective Hamiltonian is given by, your H is given by P square by 2M. है ना? C square cancel, M and M is cancel, so P square 2M minus क्या? हाँ? नेगेटिव होगा, नेगेटिव यहाँ पर माइनस हाफ है ना, दिस विल बी माइनस हाफ. ठीक है? माइनस हाफ नहीं होगा, प्लस Sorry, this will be plus half. This will be plus half. Sorry, this is plus half and this will be negative. Don't worry. Half minus 1 minus half इस तरह से करके लेके जाते हो ना टेलर एक्सपेंशन में. हाँ सर नेगेटिव है ना? That will be negative. So that value is equal to P to the power 4 और ये क्या बात आ रहा है? 8 क्या होगा ये? m cube c square 8 MQ c square C square. And all term we can neglect. We have minus E square 4 pi epsilon naught 1 upon R. Now these two term, इन दोनों का सॉल्यूशन तो हमें पता है. अगर पहले दोनों को हम ऐड कर दे तो, and we can use perturbation. So this is my original Hamiltonian. ऐसे करके दे दो. Minus
or you can write minus also, minus E square 4 pi epsilon naught R. So this is my original Hamiltonian, and this is my perturbed term, and this perturbed term is minus P to the power 4 8 m cube C square. Are you getting my point? Yes, sir. Huh? Yes, sir. Yes, sir. So now I can use this thing as my perturbation term. इस term को क्या कर सकते हैं? We can use that my perturbation term. And for the first order correction, we have to find the expectation value of what? P to the power 4. यही होगा ना? Yes, sir. Yes. So what we have basically E relativistic of the order 1, that is psi n l m HP psi n l m, यही तो निकालना होगा. Yes, sir. ठीक है. And now I can take minus 1 upon 8 m cube C square is basically psi n l m P to the power 4 psi n l m. So the greatest challenge is that how you will get P to the power 4. The expectation value of P to the power 4. Are you getting my point? Yes, sir. कैसे इसको हम कैलकुलेट करेंगे? ओके, Yes, sir. है ना? हाउ विल कैलकुलेट इट? चलो जरा बताओ तो. कल मैं इसे कैलकुलेट करूंगा, डोंट वरी. टुमारो आई विल फिनिश दिस ऑल फाइन स्ट्रक्चर. सो आपको मजा आएगा जब मैं कैलकुलेट करूंगा. बट हाउ यू विल कैलकुलेट इट? P to the power 4, please. And what is P? Sir, What is P here? So momentum. Angular momentum in spherical property. एंगुलर मोमेंटम है ये. नहीं sir. Momentum. एंगुलर लीनियर सब है भाई. Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes, sir. भाई ये P4 के अंदर क्या है? P स्क्वायर P रेडियल बाई 2m भी है और P थीटा स्क्वायर यही है ना? P थीटा स्क्वायर भी है और इसका होल स्क्वायर है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. सिर्फ P स्क्वायर को तो आपने ये लिखा था, याद है? माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डी स्क्वायर अपॉन डी आर स्क्वायर 2 बाई आर डी आर अपॉन डी आर. ये तो सिर्फ रेडियल पार्ट था. और प्लस L इंटू L प्लस 1 एच कट स्क्वायर अपॉन 2mr स्क्वायर. याद है ये? Yes, sir. काइनेटिक एनर्जी को तो यही लेकर के आए थे हम फाइनली. Yes, sir. हाँ. So and now you have to go for P4. And this is nth state. Don't worry. ये कौन सा स्टेट है? Nth state. Nth state. So you will do one more square. It will create a havoc. Are you getting my point? Yes, sir. This will create a havoc to you. P square by 2m कर देता हूं तो यहां पर ये आ जाएगा. Otherwise you can remove 2m. So how you will solve it? This is the real challenge. And then concept come into picture. कल तक के लिए थोड़ा सा वेट करो because it's too late, है ना? कल इसे पूरा करते हैं. ठीक है? Yes, sir. थोड़ा सोचो कैसे होगा. सर रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट को अगर अलग करें, कर लो अलग. रेडियल पार्ट का एनर्जी यहाँ भी आर स्क्वायर है भाई. जस्ट ट्राई टू थिंक. सॉल्व तो मत करना, ट्राई टू थिंक. ओके Okay, sir. ओके. कल हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से. ठीक है? Yes, sir. ओके, थैंक यू. Thank you. Thank you. Thank you, sir.